Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 3, that is flowers and seeds, and today I will deliver its 5th lecture. Before moving on towards the lecture, let's start with an activity. So collect seeds of different plants and paste it on chart paper and present it in class individually. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स को टीचर्स आप स्टूडेंट्स को कहिएगा कि वो डिफरेंट सीड्स जो हैं उनको कलेक्ट करें और उसके बाद उनको छोटे छोटे पॉलीथिन बैग्स के अंदर डाल के स्टेपल करें और फिर उनको एक चार्ट पेपर पे पेस्ट करें एंड देन प्रेजेंट इट इन द क्लास कि ये कौन से प्लांट के सीड्स हैं. सो दे कैन इन दिस वे दे कैन सी द शेप्स, कलर्स एंड साइजेस ऑफ डिफरेंट सीड्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इज बी अ डायकॉट और मोनोकॉट? क्या जो मटर के बीज होते हैं ये डायकॉट होते हैं या मोनोकॉट होते हैं? These are dicots, and then comes the chickpeas. These are also dicots. Then comes the oats. These are monocots. So my dear students, इसका मतलब ये है कि अगर हम सीड का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो अगर बाहर से आप देखते हैं तो वो आपको डिफरेंट साइज या कलर के नज़र आते हैं, डिफरेंट शेप के नज़र आते हैं, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से भी सीड्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. सम आर मोनोकॉट्स एंड सम आर डाइकॉट्स. मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स क्या होते हैं? वी विल हैव अ लुक एट दैट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ चिकपी एंड मेज सीड. So my dear students, let's have a look at the Islamic perspective. Have you thought about what you cultivate? Is it you who make it germinate or are we the germinator? So my dear students, Allah Taala जो है वही जो है वो हर पौधे को उगाने पर या उसको बीज से पौधा बनाने पर कुदरत रखते हैं. So my dear students, some pre-reading questions. Quickly tell me, have you ever dissected any seed? क्या आपने कभी सीड को दरमियान से खोल कर देखा है? नहीं देखा? आई विल शो यू द पिक्चर्स ऑफ द सीड्स कि वो अंदर से खोलकर कैसे लगते हैं. चिकपी सीड इज डायकॉट और मोनोकॉट? इट इज अ डायकॉट सीड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन पेज नंबर 43 in your science 5 books. I hope everybody has opened the books. So my dear students, let's start the lecture. So structure of dicot seed, chickpea. Chickpea is dicot seed. It contains 2 cotyledons. It is composed of following parts. So my dear students, एक जो चना होता है वो dicot होता है क्योंकि इसके अंदर 2 cotyledons होते हैं. That is why it is called a dicot seed. अब इसका internal structure कैसा होता है? Let's have a look. Seed coat, सबसे ऊपर इसके ऊपर seed coat होता है which is called testa. It is thin outer coat that protects the seed from outer harsh conditions and infections. So जो outer part होता है seed का testa होता है, seed coat होता है, ये infections से बचाता है. Cotyledons. In dicot plants, the endosperm is absent. The 2 cotyledons store food for the new plants as an alternative to endosperm. So my dear students, जो डायकॉट सीड्स होते हैं उनके अंदर 2 cotyledons होते हैं और इनके अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है which stores the food. The food is stored in the 2 cotyledons. So my dear students, here you can see ये एक चना है, सफ़ेद चना which is called chickpea, और ये उसका टेस्टा या सीड कोट है. ये इजीली रिमूवेबल नहीं होता, लेकिन आप इसको इजीली कैसे रिमूव कर सकते हैं? आप चने को कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए फॉर फ्यू आवर्स या ओवरनाइट पानी में डाल दें एंड व्हेन यू विल टेक इट आउट तो आपको इसके ऊपर से ये छिलका आराम से उतरता हुआ नजर आएगा. एंड दिस कोट इज कॉल्ड सीड कोट और टेस्टा. ये इसको इन्फेक्शन से और हार्मफुल कंडीशन से सेव करता है. देन This tip is called the radicle, जहां से रूट ग्रो करती है. So this is the radicle of the seed. अब हमने सीड को, चने के बीज को खोल दिया है, ठीक है, हमने सेंटर से इसको डाइसेक्ट कर लिया है. So this is the plumule. ये इसके अंदर ही होता है plumule, and these 2 are the cotyledons where the food is stored, and this is the outer portion which is called the testa or the seed coat. So my dear students, this is the internal structure of the seed. Next, we will talk about the embryo. The seed contains a part from where the life of a young seedling starts, which is called the embryo. So my dear students, embryo अगर हम देखें तो this is the embryo जहाँ से न्यू लाइफ ग्रो होगी, यानी कि रेडिकल जिसमें से रूट्स ग्रो होंगी, और प्लूम्यूल, यानी कि एम्ब्रियो के 2 पार्ट्स होते हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल.
So my dear students, it contains the following parts. Radicle, it is a part of the embryo which develops into root, and plumule, it is the part of the embryo which develops into stem. यानी कि ये दो पार्ट्स हैं एम्ब्रियो के सीड के अंदर ही ये मौजूद होते हैं. एक जो है उससे रूट्स बनती हैं और दूसरे से स्टेम जो है वो डेवलप होता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम मोनोकॉट्स के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हमने डायकॉट के बारे में पढ़ा है. लेट्स नाउ कंपेयर बोथ ऑफ देम. सो कंपैरिजन बिटवीन मोनोकॉट एंड डायकॉट. Difference between monocot and dicot seed is given below. So monocot, only one cotyledon is present. Two cotyledons are present in dicot. Cotyledon is thin, small and does not store food. अब मोनोकॉट का जो कॉटिलेडन होता है ये सिंगल होता है, पतला होता है, छोटा होता है और ये फूड स्टोर नहीं करता. Whereas in dicots the cotyledons are fleshy and store food, and there are two. Endosperm is present and stores food. Endosperm is mostly absent in dicots. Now monocot, radicle is protected by coleorrhiza, protected sheet, and plumule by colopetile, whereas coleorrhiza and colopetile are absent or not present in dicots. So this is the difference between monocot seeds and dicot seeds. Monocot seed की example है corn, maize, whereas dicots की example है peas, red beans and chickpeas. So my dear students, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, draw a monocot seed and label it. Monocot and dicot seed and label it. So आपको एक साइड पे monocot seed बनाना है और उसको लेबल करना है. दूसरी साइड पर आपको dicot seed बनाना है और उसको लेबल करना है. वेरी इजी. अभी आपने dicot seed देखा, monocot seed कुछ इस तरीके से बनता है. So this is the endosperm. This is the cotyledon. Then comes the dicot. So two cotyledons are present. Radicle, इसमें यहाँ radicle होता है और इधर plumule होता है. So this is how you will make the diagrams and you will also label them. So my dear students, questions that you will do in this worksheet are: give two examples of the plants that are monocots, maize and corn. Give two examples of the plants that are dicots, chickpeas, peas and red beans. What is a cotyledon? These are the seed leaves which are present inside the seed. What is the radicle? The radicle is the part of the embryo which develops into roots. What is a coleopetile? It is the protection of the radicle. And what is the function of endosperm? It stores food in the monocot seeds. So my dear students, so radicle is, so coleopetile is the protective covering of the, sorry, I made a mistake here. So coleopetile is the protective covering of the plumule which develops into the stem, okay? And coleorrhiza is the protective covering of radicle, okay? Keep this in mind. So my dear students, for exercise, you will move towards page number 48 and you will do differentiate between the following: endosperms and cotyledon, and radicle and plumule, monocot and dicot. Describe the structure of the chickpea seed. और आपको chickpea seed का structure भी बताना है. So endosperm and cotyledons में क्या फ़र्क है? Endosperm stores food in the monocots. Cotyledon is the seed leaf which is present inside the seed. And radicle and plumule, radicle develops into the roots, plumule develops into the stem. Monocot and dicot, monocot have only one. अभी हमने उसके comparison किया, you can take help from that. And then describe the structure of the chickpea seed. You can also take help for this from the book, और आपने diagram भी इसके लिए draw करनी है. So my dear students, now is the time for evaluation. Quickly answer the question: which part of the embryo develop into roots? Radicle, very good. Describe the function of cotyledons and dicots. They store food because they are thick and fleshy, so they store food in the dicots. So my dear students, now quickly note down your homework. For homework, you will do, you will come on page number 47 and you will do exercise A, part 6 and 7.
Plumule is dicot seeds. Plumule in dicot seeds develop into shoot, root, leaves, or flowers. It develops into shoot. The first leaves in the dicot plants are cotyledons, radicle, plumule, embryo. They are plumule. So, my dear students, the first leaves in dicot plants are plumule. So, my dear students, you will do independent activity number 2 given on page number 42. Classify the seeds of dry fruits into monocots and dicots. So, आपको different जो dry fruits हैं उनको identify करना है और बताना है कि whether they are monocots or dicots. So, almonds are dicots, walnuts are dicots, cashew nuts are dicots, pistachio is a monocot. So this is how you will complete this activity. Next is project number 2. Collect and classify the seeds of vegetables and plants you eat into monocot and dicot. Wash, dry and paste your collected seeds on chart paper. Label their visible parts as well. Present your chart in the class. So my dear students, आप different fruits और vegetables खाते हैं, आप उनके seeds को save कर लें, wash करें, dry करें, उसके बाद patch dry करें, थोड़ी देर खुश्क होने के लिए रख दें, उसके बाद आप उनको chart paper पे paste करें और फिर आपने ये बताना है कि whether they are monocots or dicots और आप उनके visible parts को label भी करें. So my dear students, this is your project, this is your home activity करनी है आपने, ये बहुत मज़ा आएगा आपको करने का. And so, my dear students, now is the time for wrap up. So, today we learned that chickpea is a dicot seed composed of 3 parts, seed cotyledons and embryo. Monocot seed has 1 cotyledon while dicot has 2 cotyledons. So, my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.